CLAT is just around the corner and BYJU'S exam prep knows exactly how important this exam is for you. Catch us live for a detailed CLAT analysis where we shall provide you expected cutoff, paper pattern and much more. So join us live on 18th December 2022. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hi everyone, very good afternoon and welcome to BYJU'S exam prep. Hi Vishal, hi Arya. Am I clearly audible and visible, everyone? So good to see you guys back because I wanted to have a session with you before CLAT happened. Though I did not have a session scheduled with you, we thought of cancelling today's editorial class and having a class of this sort for you. I'm going to tell you what are we going to be doing in the session today. Just wait for a few minutes. Good evening, good afternoon, everyone. Could you please confirm if I'm clearly audible and visible? Good afternoon. I have been doing really good. I'm very excited. One entire year's hard work is about to show its true colors to us in the next 2 days. Yes, clearly audible and visible. Okay, guys. So अब देखो आपके पास में barely 2 दिन बचे हैं CLAT के लिए और I'll be talking to you. Okay, Preeti, I'm glad. Yes. So I'll be talking to you about a lot of things. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. I'm sure अभिमन्यु sir, निवेदिता ma'am, Salik sir, Shurojit sir, KD sir, सबके sessions भी होंगे. But since I had been talking to you about a lot of important articles to read, I had shared oddly 15 articles with you, which you were supposed to solve, and वो articles आपके लिए पढ़ना जरूरी था. So I thought of taking this opportunity again and giving you 5 more articles from those sources जो मैंने 75 most important वाले articles आपको बताया था, remember? So I've brought 5 more articles from that source. We'll be solving those articles. We will be solving main idea questions on those articles. So ready everyone? Good to go? I have 5 passages for you. The passages are from either the Telegraph or the Print or the Scroll. These sources where I think CLAT might give you a passage because sample papers also had these passages. और इनको हम सॉल्व करेंगे और इनके मेन आइडिया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. काफी ट्रिकी क्वेश्चंस बना के लाई हूं मैं क्योंकि नेम आइडिया, नमस्ते उज्जवल, आना बहुत लाइकली है, तो वो चीज हम क्लास में आज सॉल्व करेंगे. सो हाय कीप इवन, गुड इवनिंग. So ready everyone? App maybe everyone? Are you ready? दिखा दो फर्स्ट पैसेज everybody. Out of the 5, the first passage आपको आंसर करना है what is the main idea. Okay, so I'll be giving you options for that, but before I show you the passage एक बार देख लेते जल्दी से एजेंडा क्या है. सेशन का एजेंडा है कि हम RCs from various editorials, various sources solve करेंगे, 5 passages solve करेंगे, मेन आइडिया क्वेश्चन उसका मास्टर करेंगे बिकॉज 100% मेन आइडिया क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में. 5 पैसेजेस में मेन आइडिया सॉल्व करेंगे. ठीक है, जस्ट अ मिनट. डर लग रहा है? कोई बात नहीं, अभी मैं तैयारी करवाने आई हूं ना, डरने की नीड नहीं है. ठीक है, डरो मत, अभी मैं बूस्ट करने आई हूँ कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो हियर इट इज. रीड द फर्स्ट पेज, सेंड मी अ डन. अच्छा एक बात और, आर्टिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑप्शंस और भी ट्रिकियर हैं, क्लोज हैं. मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ. बाय द एंड ऑफ द पैसेज यू हैव अ मेन आइडिया क्वेश्चन. तो आपने जो भी क्या आइडिया लिखा है, तो आपने जो भी टेक्निक यूज करते हो आप मेन आइडिया ढूंढने के लिए, वो टेक्निक यहाँ अप्लाई करनी है आपको. ठीक है, बट बाय द एंड ऑफ द पैसेज आपको ये क्वेश्चन करेक्टली मार्क करना है. हियर एवरीवन, ऑल द बेस्ट. रीड दिस एंड सेंड मी अ डन.
Next page, everyone. Page number 2. Send me done once you're done, everyone. Next page. Dhanushma, the options are not very easy. Changing the slide. Anmol, I'll answer your question towards the end of the class. Please stick with me towards the end to know the answer. Hi, Atul. Last page to the passage, everyone. Here you go. ठीक है. Here you go, everyone. What's the correct answer to this question? Central idea of the passage. Be very careful, everybody. नाक नहीं कटवाना मेरी. What's your correct answer?
B. What's your answer, everyone? A. Okay. A, B. A and B are actually very close options. Okay, let's talk about this a bit. When you have main idea close options like A and B are, how do we come down to our correct answer here? 90% of you, 99% of you are confused between A and B. Okay, I'll announce what the correct answer is. But first, let's learn how to differentiate between two close options. Now, first step is going to be that you see what is the difference between the two. Are there terminologies used in A that are not used in B that makes A different from B and vice versa? So we'll first try to find the difference between the two options. And then we'll see which one of these two is a bigger picture, which encompasses every aspect of the passage. Okay, that's what we're going to be doing. ठीक है, A, B, A, ठीक है, compare करते चलो. A says, Heiko sketches of India, although brief, gave the reader a wide look what life was like in the 8th century of the Indian subcontinent. Yes, how India was. B says, a rare record of ancient India. Can I say adding this makes B more descriptive? A rare record of ancient India. The scroll is a travelogue. Calling the scroll a travelogue because Heiko traveled across this continent. And it's also called a memoir. This is a scroll which tells us about Indian culture, customs, and geographical features. Ab dekho, what you have to do is you have to tell me, it has suddenly got dark for some reason. I think it's because of the sunset. You'll have to make do with the dark background. ठीक है, I'll give you the next passage. By the time I'll fix the dark picture. अभी देखो इसका आंसर करते हैं. अभी इन दोनों में से you see B is more detailed, encompasses more things from the passage. Automatically A में short है देवांशु. Agreed. So if you try to differentiate between them, B is something that encompasses various other aspects. It's bigger than what A is. तो A गलत नहीं है आंसर, बट क्योंकि B में इतनी सारी और इंफॉर्मेशन एडेड है, लाइक दिस, लाइक दीज वर्ड्स, स्पेसिफिकली वर्ड्स जो पैसेज में डिस्कस्ड है, ये इसको एक ब्रॉडर आंसर बना देता है, encompassing everything. The correct answer is going to be a B here. Okay, a lot of you marked A, बट आपने बाद में चेंज कर लिया साइड, कोई बात नहीं. नेक्स्ट पैसेज पे चले एवरीवन, रेडी? ठीक है, दैट वाज पैसेज नंबर 1. नेक्स्ट पैसेज दिखाने से पहले आपको we've launched a test series and you still have time. You can enroll yourself for the test series. जल्दी जल्दी से enroll कर लो. Details are there under my video in the description box. And this is our schedule for our revision series for the these days, that is today and tomorrow. तो दोनों दिन के schedule देख लो और मिस नहीं करना है classes. Okay, passage number 2 by the time I fix the dark video. Okay, all the very best everyone. Read the passage carefully and send me a done. Exactly, yes, Saida, it was there. Changing the slide, everyone.
Acha, before I show you the next slide, remember this passage is followed by a main idea question with very close options. Make sure by the end of the passage you know why has the passage been written. You use the techniques taught by me to you. Page number 2. Page number 3. Here you go. Ruchika, I can help you, but for getting the answer to this question, you'll have to stick with me till the end. I will answer your question by the end of the class. Next slide. No, Neha, this is the second one. Next page, everyone. Here you go. And the last one, I think.
this writing style of this passage is pretty similar to uh, the 2021's passage on Sherlock Holmes, Hercule Poirot, and various other detectives. Next page, last page. Okay, here you go. Main purpose, main theme of this passage. What's the correct answer here, everyone? This is an easy one, actually. I think most of you are going to get it correct. Okay. What's your answer, everyone? See? Unanimous. See? अच्छा थोड़ा easy बना दिया क्या? Rajika says B, D, or A, or C. See, I'll tell you something. Why did I draw an analogy between this passage and Hercule Poirot and Agatha Christie's books and Sherlock Holmes, these various detectives, Father Brown? You remember that passage? I drew an analogy between these two to help you find the answer to this question correctly. If you remember, there were 3, 4 detectives mentioned in that story. Sherlock Holmes, who has a different way of identifying culprits. Father Brown, a different way altogether. Hercule Poirot, a different way out of the 3 detectives. But then there's a common link between them. Their methodologies are different, but all of their jobs is to find out the culprit correctly. Okay, keep even. I can read that even if you send me once. Okay, so Arpit, so the same goes for you as well, my child. Please send me your answers only once, otherwise it's pretty distracting. I'll not be able to look at your comments. Okay, back to it. There was a common link. In this story also, there are many books mentioned, but there's a common link. If you found out the link, you will know the correct answer to this question. The link is that there are various books, but every book is on children and how children perceive the world, which is mostly unknown to adults. So the whole purpose of these books written is to make it easier for adults to know about the life of young people. With that, what is your one final answer here, everyone? I've given you a big hint. There's a connection between all the books mentioned. Some talk about a child who can't talk, yet focuses on people outside, learns from people outside, children, their depression, their mental health. Many, many books teaching you about children. Yes. If you have understood the theory given by me now, you are absolutely correct. The correct answer is a C. So a lot of people had a confusion between A and D. It's not merely about various writings of Padmini Mongia. It's about these books that talk about children. That's the common correlation between them, and that's exactly why your correct answer is a C here, everyone. Okay, good job done. Most of you got that correct at one go. Okay, next चलते next passage में, but next passage चलने से पहले R7 ने महा revision series is going on. You left with 2 days. मैंने schedule आपके साथ share कर दिया है, class के end में भी share कर दूंगी. आज भी classes है, कल भी classes है, attend करना है, live miss नहीं करना है. Next page, here you go. मजा आएगा पढ़ के. All the best.
Changing the slide. Slide number 2. I don't know, Harini. You have to guess it. Yes, Danushma. Next page, everyone. Next page, everybody. Snehal, they are. Next page, everyone. And the last one. Here you go.
Next page. Here you go. What is the main purpose of the passage? What's your correct answer? Just a minute. What's your correct answer, everyone? What did you mark? D? KSI live. While you were reading the passage with me, I thought तुमको मेन आइडिया समझ में आ गया है क्योंकि आपने एक ऐसा वर्ड लिखा था जो कि बिल्कुल मेन आइडिया को डिफाइन कर रहा था. फिर ये गलत कैसे मार्क कर दिया तुमने? बच्चे, again, there are many stories in the whole passage. What is one common link to it? Is it cruelty to society? Is it rebellious women against patriarchy? Or is it hardships that have been caused to women by the society? You have to choose one. Certainly B is the worst of the options because it is not merely discussing writings of Masroor sisters. There's a connection between all these writings. What is the connection? KSI Live, would you like to change your answer? So, see, there are stories where there is patriarchy, and then there are stories where rebellion comes up. It's a combination of rebellion and patriarchy, both. Now you're changing your answers, everyone. It is rebellion and it's women and it's patriarchy. बच्चे, अगर मैं आपको पैसेज के एंड में 4 वर्ड्स पूछूं जो ये पैसेज को डिफाइन करेगा, उनमें से 3 वर्ड तो फॉर श्योर आपके होंगे पेट्रियार्की, women और स्टोरीज. ये 3 तो जरूर होंगे आपके मेन आइडिया का पार्ट. रिबेलियन ऑफ कोर्स क्योंकि वो पेट्रियार्की से एसोसिएट हो जाता है, इसको भी आप एज अ मेन आइडिया इंक्लूड करोगे. सो इफ यू आर कंफ्यूज, देखो वो कौन से वर्ड्स है. रिमेंबर दोज वर्ड्स दैट वी थिंक ऑफ एज अ पार्ट, दीज वर्ड्स दैट विल डिफाइन द इंटायर पैसेज. ये हमेशा काम आएगा टेक्निक आपके. अग्रीड एवरीवन कि ये 3 वर्ड्स हमारे मेन आइडिया डिफाइन करेंगे, पेट्रियार्की, वुमेन एंड स्टोरीज, राइट? तो करेक्ट आंसर यहां आपका एब्सोल्युटली ए है, अनडाउटेडली, बिकॉज इट टॉक्स ऑफ patriarchy for sure, which no other option does. It also talks of women, जो कि criticize society for the hardship they have caused to women. Yes, but it's not, the purpose of the passage is not to criticize the society. It's to quote the stories that criticize society. You see the difference between A and D? And that's exactly why D cannot be your answer. Yes, cruelty as well. Absolutely साइदा, बिल्कुल सही बोला था. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट पैसेज दिखाती हूँ. we're left with 2 more passages, but नेक्स्ट पैसेज दिखाने से पहले एक या एग्जैक्टली आशी, द टोन ऑफ द ऑथर इज नॉट क्रिटिकल. बच्चे, ऑथर का पर्सनल ओपिनियन नहीं कि सोसाइटी खराब है, वो लोगों को हार्डशिप कॉज करती है. ऑथर इज डिस्क्रिप्टिव हियर. वो वेरियस स्टोरीज को कोट कर रहा है जो कि मसरूर सिस्टर्स ने लिखी थी. उनमें से एक ज्यादा पॉपुलर थी, एक कम थी, और वो कैसे पेट्रियार्की को दबाने के लिए लिखी गई थी स्टोरीज. अब स्टोरीज नेगेटिव चीज पे, इसका मतलब ये नहीं कि ऑथर का नेगेटिव ओपिनियन होगा. ठीक है? सो टोन ऑफ द ऑथर इशिका यहां होगा डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव. आई थिंक डिस्क्रिप्टिव इज मोर एन एप्ट टोन हियर. ठीक है? नेक्स्ट पैसेज दिखाने से पहले आई एम लेफ्ट विद 2 मोर पैसेजेस. आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट अ फ्यू थिंग्स. पहला, अभी भी आप लोग मेन आइडिया में कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ. मेन आइडिया क्वेश्चन जरूर आएगा, उसको आंसर करने के लिए 2 टेक्निक यूज करना. एक होगी बिग पिक्चर और दूसरी होगी 4 वर्ड्स दैट डिफाइन द होल पैसेज. Okay, these are the 2 techniques. If you still haven't mastered these techniques, अभी भी हमारे कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड है हमारे चैनल में,
अल्पा शर्मा, टोन ऑफ द ऑथर अल्पा शर्मा, मेन आइडिया, थीम ऑफ द पैसेज टाइप करना सर्च बार में, यूल फाइंड माई वीडियोस, प्लीज उनको ध्यान से देख लेना। टू, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कल करने के लिए, कि आप कल क्या करोगे ये मैं क्लास के एंड में बताऊंगी, कि क्या करना चाहिए कल आपको, जो मिस नहीं करना चाहिए परसों एग्जामिनेशन देने से पहले, तो वो प्लीज सुन के जाना। थ्री, मेरा सेंटर मोदी नगर आए, तो किसी का मोदी नगर सेंटर आए, एंड इफ यू लैंड अप इनटू द सेम कॉलेज एज आई डू, कम एंड से हाई टू मी। सो एंड डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द फाइनल रेस टू क्लैट 7 PM एंड 9 PM, भूलना नहीं, ठीक है, अटेंड करना आज भी। हियर यू गो, नेक्स्ट पैसेज। ये भी एक कहानी है, बहुत सारी कहानी है आज, पढ़ो एंड सेंड मी डन। यस हरिनी, दे विल बी वेरी वेरी सिमिलर। कोई बात नहीं धनुष्मा, एग्जाम में सही हो जाएगा, आई एम श्योर। Easy Harini, the cutoff will be high. Next page everyone. I have very fond memories of Chandni Chowk. Next page. Hmm. Yes, Shashti. Remember the Roshogola story in the sample paper? It's from the same source. Last page.
I could see कौस्तुभ तो तुम्हें मजा आ रहा था पढ़ के, बहुत जल्दी जल्दी डन आ रहा था. And idli too. Okay, I'm sure all of you must have heard of ये देश है वीर जवानों का, and इन्हीं लोगों ने being played over an instrument like shehnai or pipe or flute, right? I'm sure you must have heard of it. आते main idea question पे. Here it is. Okay, no, not main idea, but a title of the passage. Again, it's a variant of the main idea question, but you have to handle it a little differently. Be very careful with what you mark here, everyone. मैम मैं लेट हो गया, इसके बाद और पैसेज है क्या? एक और है या लास्ट लाइन इज हिंदी हरिणी. अभी ठीक कर देंगे महक, डोंट वरी. बी बी डी. Oh, I love this. You are falling into my trap. ठीक है, देखो डिस्कस करते हैं ये आंसर कैसे निकालेंगे. अब मुझे मजा आ रहा है. देखो इसका आंसर को निकालने के लिए you need to understand, just a minute, that it's no different than the main idea question. Okay, so whatever we mark, just that it could be a little more concise than the main idea options. Of course, Danushma, B and D. It's not the plight of all the musicians, so C is eliminated, and old is not gold anymore is the most randomest topic you would ever see. He is not trying to check your creativity. So A can certainly not be your answer. Okay? I hope you understand the plight of musicians is wrong because it's not the plight of all the musicians. So this is incorrect. Old is not gold anymore. Too generic. How do I know it's a title of the same passage we just now read? So basically these words, okay, that will help us identify the correct answer. Now B and D very, very close. To differentiate, we'll see the difference. To find the correct answer, we'll see the difference. How does B become different from D? See, absolutely गलत है बच्चे. B और D में से ये आंसर है. तो B और D में डिफरेंस क्या है? Old Delhi losing its charm, the Shehnai, और the Shehnai's fight for survival. एक बात बताओ बच्चे, is the passage specifically associated to, yes, KSI, is the emphasis given over Delhi, old Delhi specifically, or is it about Shehnai struggling? आपको ये चूज करना है. क्या पैसेज ज्यादा एम्फेसिस ओल्ड दिल्ली पे दे रहा है, और इज द पैसेज फोकसिंग ऑन द स्ट्रगल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द शहनाई? ये बताओ मुझे. इज द एम्फेसिस स्पेसिफिकली ऑन ओल्ड दिल्ली? That's how you differentiate between them. See, when the passage started off, it spoke about Old Delhi. 2 pages spoke of Old Delhi, but then poof, it was done. Okay, and then it spoke about weddings. वेडिंग के बाहर वो बड़े बड़े गार्डन्स बन गए, वो बाहर बैठ के म्यूजिक बजाते हैं. तो ये तो कहानी वही एंड हो गई ओल्ड दिल्ली की फर्स्ट 2 पेजेस में. कहानी आगे बढ़ गई उसके बाद. इट्स मोर ऑन शहनाई और उसका एग्जिस्टेंस जो भी खत्म हो रहा है. क्योंकि जो ये लास्ट लाइन थी ना, इफ यू रिमेंबर द लास्ट लाइन दैट सेड, क्या प्ले करते हो, व्हाट डू यू प्ले? ही सेज, क्या, हु केयर्स व्हाट वी प्ले, वी कैन प्ले देश है वीर जवानों का एंड पीपल विल बी नॉट केयरिंग इनफ, और वी कैन प्ले भजन. सी सर, आई वी basically don't play anything pretty peppy. So he's basically losing the charm. It's pretty dull. The Shehnai and its fight for survival. एक मिनट, ये ए नहीं, गलत है. ठीक है, the correct answer is a D. It's a misprint. A answer नहीं हो सकता. ठीक है, it's a D. Okay, everyone. If you have to choose between B and D, it has to be a D only.
Agreed, everybody? Of course, A is the worst of all the options. It's too generic. I hope you understand it's a misprint. Okay, everyone? Ma'am, so we must see what the emphasis of the terms exactly, Parvati, and that is the trick of eliminating closed options. Yes, Ramdas, the last paragraph does. Okay? Chaliye. So when you are confused between two closed options, dekho, what is the difference between them? What are those tiny minute words that will create a huge amount of difference? The same goes for inference questions as well, tone questions as well. Let's go to our last paragraph, everybody. But before that, day after tomorrow, all of us, all of our teachers are coming live together on 18th of December. We'll discuss the section-wise cutoff, the expected cutoff, not section-wise, section-wise attempts, expected cutoffs, difficulty level, correct answers to each questions. It's going to be a marathon again. Make sure you watch us live. The timing will be shared with you very, very shortly. Here's the next passage. Read this and send me. It's a tricky one, everyone. It is, Nisi. It is. Yes, Rashti, absolutely. Keywords will work for you. अच्छा एक बात रुको ये दिखाने से पहले सेशन लाइक करो यार. You've been watching me for the last 45 minutes. There are 101 people watching me live and there are barely 63 likes. Please like it right now. You're getting it for free. You need to pay something back to me and please share the session. Share it with everyone, all Telegram groups, all WhatsApp groups. इतना तो करना पड़ेगा, okay? How do you need this? The last 15 minutes are left for this session, and this is the last passage, okay? I hope you've hit the like button. Here you go with the next page. Read and send me a done. It's going to be a 5, Harini.
Parvati, I wouldn't answer that. I think Abhimanyu, Nivedita, or Shurojit are the best people to answer that question. Next page. Next page, everyone. These are big passages. I've made them short for you. It's okay, Ishika. Should not be an issue. Last page. No, Ram. नीड ही नहीं है. ट्राई करो. Okay, done, everybody. What is your central idea of the passage? अच्छा, थोड़ा सा एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं. Now, which one will you mark? Sarthak, still A? A is too generic. बिल्कुल इशिका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. मेन आइडिया सही होता है ना.
liberal arts need to make a shift in their register without losing the nuances they traditionally espouse. Is that not what B is saying? Liberal arts, to be equally attractive to modern audience, needs to change its SOP while sticking to its traditions. बच्चे देखो एक बात डिस्कस करते हैं, पहले तो बी और डी में से चूज करते हैं एक, बिकॉज बी एंड डी दे टॉकिंग अबाउट वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, तो पहले बी और डी में से चूज करते हैं. अगर बी है तो साथ में सी होगा कि नहीं वो बाद में डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स यस कनिष्क, देयर कुड बी, सर्टेनली यस. तो बी और डी में डिफरेंस ये है कि हमने बी में एक तो एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर लिया एसओपी, जो कि पैसेज में मल्टीपल टाइम्स यूज्ड है. Okay, D says liberal arts needs, just a minute, liberal arts art needs to make a shift in their register without losing the nuances they traditionally espouse. इसका मतलब अभी उनको अपने टेक्निक को चेंज करने की जरूरत है. क्यों नहीं पता, बट B says क्यों पता है, क्योंकि ऑडियंस मॉडर्न हो गई है. पॉसिबली ट्विटर के फॉर्म में, शॉर्ट मैसेजेस के फॉर्म में हो गई है. तो क्योंकि उनको मॉडर्न ऑडियंस को भी दिस वाई इज आंसर्ड इन बी विच इज नॉट आंसर्ड इन डी. विच वन ऑफ देम इज मोर डिस्क्रिप्टिव आउट ऑफ बी एंड डी? विच वन विल यू चूज? ठीक है, सो आउट ऑफ बी एंड डी वी हैव टू चूज अ बी हियर. अब ये देखते हैं कि सी और बी दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है. मतलब अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपको पता है आपका आंसर क्या होता है, बट एक बार फिर भी देखते हैं कि ऑप्शन होता तो चूज करते कि नहीं. लिबरल आर्ट्स इज सफरिंग इन द एज ऑफ शॉर्टर अटेंशन स्पैन. इज लिबरल आर्ट सफरिंग? क्या सफर कर रहे हैं वो? क्या पैसेज, पूरा पैसेज, सेंट्रल आइडिया उसकी सफरिंग को डिफाइन करने के लिए? बताइए मुझे. अब चूज कीजिए आंसर बी और सी के कॉम्बिनेशन में से, दैट इज ई, और द करेक्ट आंसर इज अ बी. I mean, the passage talks about how times have changed and how the SOP for liberal arts also needs to change. It has more description. With that note, our correct answer has to be only and only B, even if E was there. It's not about its suffering, it just needs to change its SOP, that is all. पूरे passage में SOP बार-बार discussed है. The correct answer is a B, everyone. ठीक है? B पे close करते हैं इसको. On that note, तो भाई दिस क्लास हैज कम टू एन एंड. ठीक है, और परसों आपका क्लैट का पेपर है. 2 चीजें मेरी तरफ से, कल हो सके तो एक मॉक दे देना. मॉक आपको 2 to 4 देना है ताकि वो आपको स्पेस में रखे कि हाँ आपकी बॉडी को आदत है कि ठीक है मैंने रोज मॉक दिए हैं, कल भी एक मॉक दूंगा, उसी तरीके से परसों भी एक मॉक होगा. मॉक ही है, क्लैट भी, ठीक है ना. तो एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंच जाना. कल रात को अपने सब कुछ, पेंसिल बॉक्स, एडमिट कार्ड, सब कुछ सेट कर लेना. ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, और रात को लाइट मील खाना, बस में खा लेना और टाइम पे पहुंच जाना सेंटर. ठीक है, परसों आपको कुछ नहीं करना है, सुबह उठ के कोई मॉक देने की नीड नहीं है आपको. और मुझे पता है कि वेरी गुड शुभम, दिवांशु, वेरी गुड. बोथ बी एंड डी क्योंकि ऑप्शन में नहीं था श्रुति, इसलिए स्तुति, एंड दे टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, सो यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ द टू. ओके, एंड यू विल ऑलवेज हैव माय ब्लेसिंग्स विथ यू. आई एम वेरी वेरी श्योर आपने जो ये पिछले 6 months 7 months में मेहनत करी है, आप बहुत फ्रूटफुली इसका आउटपुट दोगे. आपको सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है. ओके, स्पेसिफिक पार्वती ऑलवेज. Okay, so Harini, I just trust in yourself, believe yourself, and relax. There's going to be some anxiety before you enter the exam hall, but I'm sure the moment the exam starts, everything is just done. 1 minute, skim through the paper, see if there's a new thing coming up. If no, follow the strategy that you've been following. Yes, Avasti, Yashi, please tell me. All the very best, everyone. May the force be with you. May the luck be with you. And make all of us proud. See you very, very soon, everyone. Bye. God bless you.